Hi everyone, I think I should be audible. Okay, the audio should be clear for everyone. Very good evening to one and all. Finally, काफी दिनों बाद we are going live. We're trying to get the YouTube channel going again. Okay, for you guys, with just I think over 70-80 days left for your exam. है ना? ज़्यादा कुछ समय नहीं बचा है. And right, so with only so many days left for your exam, so we're gonna wait. I think my video should also be visible. Okay, yeah, there you are. So, all right, so good evening, everyone. Hope you guys have been well, and so welcome back to Sluggers. And just as I was saying, right, कि कुछ कितना है आपकी 70 days, 80 days to go for CAT. The countdown has begun, and I just said that not many days left, right? But that depends on uh, yeah, that depends on how you look at things, right? So if you that depends on how much of focus can you garner in each of these 24-hour cycles that you get 70 times, right? So आप उसको किस तरह से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है. Anyhow, वो सारे डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. Let me give you a very quick और brief introduction. 6 तो बज चुके हैं. हमारा सीरीज आपका ये शुरू आज ही करना है. एंड बट बिफोर आई स्टार्ट विद द पैसेज, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग what exactly the series is about, how are we gonna go about things. And for that I'm gonna pause my video for a bit. Wait, so just give me a moment. Yeah, so guys, the series is titled as RCs at 6 p.m., which means that we'll be solving one RC, one single RC every day at 6 p.m. 6 बजे शाम को आपका एक RC रोज हम लोग सॉल्व करेंगे. Of course, the RC will be made available to you on the very, what do you say, on the from let's say 6 a.m. on the same day. For example, अगर आपको कल का RC सॉल्व करना है, कल के क्लास के लिए आपको जो प्लेटफॉर्म पे आरसी आपको 6 बजे मिल जाएगा सुबह. What platform? Well, we have a website. The link up to the website you can find in the YouTube this video's description. Okay, sluggers.learners.something. So वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. So once you click on that, it will take you to the course of RC6. Once you go to that course, you can attempt the quiz and be ready with your doubts and queries with respect to that particular RC. Right? Rose, very simple, very simple. We'll be learning all the concepts of RCs and all the tricks. I don't like to call them tricks, but all the methods and tools that you can use to get the best out of the next 60, 70, 80 days that you have in your hand by just solving one RC every day. ठीक है, ये हम लोग को करना है, बहुत सिंपल सा चीज है. ठीक है, so अभी चलो, so let's start off with so let me take you on a brief tour of how we'll go about this. See, ये आपका टेम्पलेट रहेगा. हम लोग आपका जनरली मैंने I would like the platform जहाँ पे आप सॉल्व करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे आरसीज को, वहाँ पे it will be like almost a cat like interface with your timer and everything. So for example, the first RC that we are taking up is about capital cities disgorging bureaucrats. ये RC आपका 2019 के CAT के पेपर में पूछा गया था, right? And brief and like कुछ 500 words का आपका RC है, just over 500 words with 5 questions. Difficulty level, I would regard the difficulty level of this particular what do you say RC as on 3/5, as you can see here. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, right? So 3/5 का difficulty level इसको बोलेंगे. बहुत मुश्किल नहीं है, जरा सा easy to moderate is what I would call it. Okay, now before we get into the RC, I'll give you कि ये आपके 1 घंटे के सेशन रहने वाले. These are all going to be 1 hour sessions. Well, today it might go over 1 hour because I'm also giving you the introduction of the sessions. दिपेश का एक सवाल है. दिपेश से 6 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं सर बीआरसी में 80 डेज में. दिपेश लाइक डेफिनेटली लाइक 6 क्वेश्चन से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं. इट सीम्स लाइक थोड़ा सा हम लोग
ज्यादा ही हम लोग VRC से डर गए हैं, इतनी डरने की बात नहीं है यहाँ पे. So things are quite doable if you are able to focus on the right things, right? And then we'll talk about this. I'm gonna be with you 6 p.m. every day. So हम लोग ये सारे सवाल उठाएंगे. So don't worry about it. देखते हैं क्या है, पहले उसको देखो, ठीक है? तो देखो guys, the flow of the session, जो आपका 1 घंटे का सेशन का फ्लो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जो आप एक RC रोज सुबह सॉल्व करके आएंगे, the one RC that you will have had solved every day before 6 p.m. That RC I'll give in the first 15 minutes of this session. I will give you an overview of that RC. ठीक है, पहले 15 मिनट में आपको वो RC का एक बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? विल टेक अ पैराग्राफ, हम लोग RC को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लेंगे. मैं उसको हर पैराग्राफ का आपका छोटा सा एक जिस्ट में आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली दैट पैराग्राफ इज अबाउट. उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, किस चीज कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना जरूरी था, कौन से पार्ट्स, which parts you could have read at a good speed, which parts you could have just gone by, bypassed, right? So इस तरीके से like I'll explain each and every part of the passage, not line by line because उतना समय हमारे पास नहीं है, but we'll definitely look into the summary of each paragraph, right? So that will be the brief overview. वो आपका brief overview होगा कोई भी passage का, ठीक है? ये हम लोग first 15 minutes में ये किया जाएगा. Next 30 minutes, let's say on an average अगर हम लोग every passage has let's say 5 questions, although अभी आपके CAT में 4 questions आने लग गए हैं, so we'll dedicate around 5 to 6 minutes to every question. Central idea भी देखेंगे obviously. Look at the central idea and then we'll move on to the questions. जहाँ पे एक ही क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में 5-6 मिनट में आपके सारे डाउट्स मैं वहाँ पे सॉल्व करूंगा in the next 30 minutes. Once that is done, वो होने के बाद once all the questions are done, the last 15 minutes will be saved for query redressal. कि आपके in general जो भी queries आ रही हैं, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, आपके कंसर्न्स आ रहे हैं, या चिंता जो कुछ भी, whatever is troubling you with respect to VRC, with respect to CAT, I'll definitely try to address those issues. Okay, so I hope this is clear. This works all right, Dipesh. So अच्छा, आज का पैसेज आप लोग सॉल्व कर पाए हैं, और इज इट लाइक कि बहुत दिन बाद चैनल चालू हुआ तो ये मतलब हमें नहीं पता है कि पैसेज सॉल्व किया है या नहीं किया है? इज दैट द केस, और have you been able to, so the link to solve the passage is given in the description. You guys can let me know in the comment section. I have the comment section open for me, so मैं साथ साथ में देख ही रहा हूँ. So yeah, have you been able to solve the passage? Any chance, or was I expecting too much? ठीक है, in any case I'm gonna go through the passage. मैं आपका passage फिर भी मैं चालू कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है? My expectation from you will basically be that say, okay, Ritvik managed to solve 3 out of 4 questions. ठीक है, that means okay, कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, डोंट वरी अबाउट इट. अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो या फिर आप सेशन को फिर भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड what is the kind of flow that we will follow here. किस तरह की फ्लो हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे, like are you able to, क्या आपको हमारी पेडागोजी सही लग रही है, नहीं लग रही है, and so on and so forth. And कल से बाद में फिर आप पैसे सॉल्व करके आइएगा, ठीक है? आपको लिंक यूट्यूब पे ये इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. ओके, सो ऋत्विक, गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट. So the passage was about capital cities disgorging bureaucrats. Disgorging का मतलब क्या होता है? Disgorging means like almost like it has a pejorative or a negative connotation, and it means vomiting out, या बाहर डाल देना, right? That is the disgorging. So in the first paragraph के अंदर author ने, अगर आपने passage पढ़ा है, then in the first paragraph the author simply, बहुत ही सिंपल यार, अगर आरसी में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आरसी आपको हमेशा, जब आप आरसी देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा इतने सारे शब्द आ गए हैं और इतना सारा पता नहीं कहाँ से अंदर घुसोगे तो बाहर निकल पाओगे कि नहीं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. I believe that an RC is just about 4 to 5 ideas. That's it. एक RC के अंदर सिर्फ 4 से 5 मेन आइडियाज, कुछ एक दो आपके मेन आइडियाज होते हैं, बाकी आपके पेरिफेरल आइडियाज होते हैं. That's it. If you अगर आप RC को इस तरह से देखना सीख सकते हैं, you can learn to look at RC from this perspective. That is, an RC is just about 3 to 4 ideas, right? So let's suppose you're talking to a friend. अगर आप अपने कोई दोस्त से बात कर रहे हैं, and if your friend is telling you expressing his opinion, you know that his opinion will be in terms of like maybe let's say 2-3 points, right? 2-3 points में आपके अपने opinion डाल देगा. But अगर आप, if you try to jot down everything that he
speaks, everything that he says, it will turn out to be a complete paragraph. तो आपका पूरा एक paragraph बन के आ जाएगा, right? But behind that paragraph, you have just a very simple and small set of ideas, correct? So that sounds simple. तो इसी तरीके से आपको आरसी को देखना है. अब देखिए यहाँ पे, let's come to the first paragraph. अभी आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है. लेट्स क्विकली गिव इट अ रीड. एक फटाक से एक रीड करते हैं इसको. एंड जस्ट लेट मी गेट दिस highlighter. So around the world, capital cities are disgorging bureaucrats. In the post-colonial fervor of the 20th century, coastal capitals picked by trade-focused empires were spurned for regionally neutral new ones. ठीक है, काफी कुछ डिस्कशन हुआ कि हाँ भाई हर जगह पे capital cities bureaucrats are in this case refers to civil servants, right? जो आपके civil servants, आपके जो IAS IPS ऑफिसर्स ये सब जो होते हैं वो उनको capital cities से हटा के और किसी cities पे भेजा जा रहा है. In the post-colonial fervor of the 20th century, मतलब post-colonial fervor is post-colonial का मतलब हुआ कि after this whole era of colonialism, right? European colonialism where European countries बाकी देशों पे राज कर रही थी, वो सब खत्म होने के बाद coastal capitals picked by trade-focused empires were spurned for regionally neutral ones. ठीक है, coastal capitals जो उस टाइम पे, so for example उस समय आप देखो coastal capitals का मतलब क्या हुआ कि capitals जो कि कोई कंट्री के कोस्ट पे सिलेक्ट किए गए. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इंडिया इज अ पेनिनसुला, राइट? सो अगर कोस्टल कैपिटल्स इंडिया के केस में हो जाएंगे लाइक समथिंग लाइक गोवा, समथिंग दैट इज ऑन द कोस्ट, राइट? एंड बिकॉज दीज empires were focused on trade, they were not focused on the well-being of the country or development of the country or administration, proper administration of the country. They were focused on उनके ट्रेड पे वो फोकस थे, इसलिए उन्होंने सारे अपने कैपिटल्स कोस्ट पे रखे थे बिकॉज सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से होता. ठीक है, एनीहाउ बट डीकंपोजिंग, right? So ये सब हो रहा था, but decamping, sorry, wholesale is costly and unpopular, right? एक साथ पूरा decamp करना is kind of costly and is a costly affair. Governments these days, आजकल क्या किया जा रहा है? They prefer piecemeal dispersal, right? कि थोड़े लोगों को यहाँ डाल दिया, कुछ लोगों को यहाँ भेज दिया, कुछ लोगों को यहाँ भेज दिया. Civil servants, okay? In the past eras, अच्छा, and this trend of capital cities, जो कि capital cities एक जगह से सब जगह सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग जगह भेज रहे हैं, this trend reflects किया हमारी दुनिया किस तरह से बदल चुकी है, how the world has changed for us. Okay, in the past eras when information traveled at a snail's pace, civil servants had to cluster together, right? when the information infrastructure was not so strong, राइट? वहाँ पे अंतरदेशी आपने शायद सुना भी नहीं होगा. सो अंतरदेशी या फिर लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था. देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो वर्ल्ड वाइड वेब, देयर वाज नो टेलीफोन लाइंस. इन फैक्ट टेलीग्राफ वाज अ बिग डील इन दोस केसेस. तब बिकॉज इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं हो सकता, देन ऑब्वियसली एवरीवन हैड टू लाइक बी इन द सेम प्लेस एट द सेम कैपिटल, राइट? बट अभी क्या हो गया है? सिविल सर्वेंट्स, बट नाउ डेस्क वर्कर्स कैन पिंग ईमेल्स एंड वीडियो चैट अराउंड द वर्ल्ड एंड हेंस दे कैन बी एवरीवेयर, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. Okay, travel for face-to-face meetings may be unavoidable, but transport links to have improved. अब देखो, अगर मैं इसको एक किसी नजरिए से देखूं तो लगेगा कि यार बहुत सारी बातें कर दी गई हैं. But if you pay attention closely, you'll understand that all that the author has done here is just तीन चीजें की ऑथर ने यहाँ पे, सिर्फ तीन चीजें की हैं. ठीक है, फर्स्ट he has introduced a trend जो चल रहा है. What is the trend? ट्रेंड आपका ये है दैट कैपिटल सिटीज आर डिस्गॉर्जिंग ब्यूरोक्रेट्स. कैपिटल सिटीज ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्वेंट्स को डिस्पर्स कर रहे हैं अवे फ्रॉम सिटीज. ठीक है, दैट्स द ट्रेंड. सेकंड, दूसरी चीज क्या कही है यहाँ पे? प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप फॉर इट, कि हाँ यार अभी ऐसा हो रहा है, पहले हिस्ट्री में ये कैपिटल किस तरह से डिस्पर्स किए गए थे या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो आपको यहाँ बता गया. पोस्ट कोलोनियल फर्वर ऑफ ये कोस्टल कैपिटल्स पहले हुआ करते थे, बाद में फिर उन्होंने बाद में रीजनली न्यूट्रल कैपिटल्स के लिए उनको जाने दिया, राइट? एंड तीसरा, थर्ड पॉइंट, दैट ये जो पूरा ट्रेंड है, दिस ट्रेंड ऑफ कैपिटल सिटीज डिस्गॉर्जिंग ब्यूरोक्रेट्स, व्हाट डज दिस ट्रेंड रिफ्लेक्ट? ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये है. क्लियर अबाउट दिस? तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपल ये चीज हुआ, एक ट्रेंड है, उसका एक बैकड्रॉप दिया गया है आपको, और व्हाट द ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स वो दिया गया है. ओके, सो दीपेश, आई होप दिस इज क्लियर गाइज. सो दैट्स ऑल द ऑथर हैज डन इन द फर्स्ट पैरा. देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग इसको कम से कम समय में 1 घंटे में पूरा आरसी कर पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, तेज जा रहा हूँ. अगर आपको जरा भी दिक्कत आ रही है, कहीं पे कोई भी पार्ट आ रहा है जो दिक्कत, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है,
You can just point it out in the comment section, हम लोग देख लेंगे, ठीक है? Okay. अब पहला पैराग्राफ हमने पूरा पढ़ा. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट से we'll just look at the summary of the paragraphs, ठीक है? सेकेंड पैराग्राफ में देखो, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने बोल दिया कि ओके, कैपिटल सिटीज सिविल सर्वेंट्स को बाहर सब जगह भेज दे रहे हैं, एक ही जगह रखने की जगह अलग अलग क्लस्टर्स में डाल दे रहे हैं. एंड पहले ऐसा हुआ करता था, अभी ऐसा होता है. एंड देन लाइक दिस रिफ्लेक्ट्स कि हाउ द इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज जहाँ पे आसानी से मैसेजेस हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं, इसलिए ये पॉसिबल है आज. ये पहला पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में ही इज टॉकिंग अबाउट दैट लाइक व्हाट द प्रोपोनेंट्स ऑफ मीन, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि हाँ नहीं सही बात है, सिविल सर्वेंट्स को एक ही जगह कैपिटल में रखना नहीं चाहिए, अलग अलग जगह रखना चाहिए. सो सेकंड पार्ट टॉक्स अबाउट second paragraph is just about the supposed benefits that these proponents believe that exist so far as this whole trend of disgorging bureaucrats from capital cities is concerned. ठीक है? तो सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ ये है, क्या क्या आपको ट्रेंड चार एडवांटेजेस बताए गए हैं, चार सपोजिड बेनिफिट्स बताए गए हैं इस ट्रेंड के. पहला आपका बेनिफिट है दैट कि यार अगर सारे के सारे, लेट्स से इफ ऑल ऑफ योर give me a moment, let's say if all of your civil servants are like just located in one place, अगर सबके सब आपके एक ही जगह हैं, and if there is a terrorist attack or maybe some sort of natural disaster, the whole government machinery will be crippled, right? सारा का सारा सब, like all the personnel, all the officers will be lost just at one point, right? As opposed to if they are dispersed in multiple, what do you say, locations. In that case, a single, it's unlikely, the risk is kind of diversified, right? So that's the first, वो पहला पॉइंट ऑथर ने बताया. दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, दैट wonks in the sticks. Now wonks in the sticks, guys, is basically a phrase that is used for people who are considered to be a little nerdy, right? जो कि मतलब बहुत like हमेशा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते रहते हैं, kind of like bookish or kind of geeky in nature, right? That's what wonks and sticks mean. The second point, the second benefit that has been pointed out here is that these nerdy people, these otherwise kind of geeky what do you say, civil servants, अगर इनको कहीं दूसरी जगह रखा जाएगा ना, कि maybe शायद in some relaxing kind of county or village जहाँ पे forest and natural flora fauna काफी कुछ है, then they will be inspired by new ideas. तो उनको better तरीके से नए ideas आएंगे, they'll be able to think out of the box. So that's your second point. वो आपका दूसरा point इस पैराग्राफ में बात किया गया है. तीसरा point, third point is that autonomous regulators, so many of these civil servants will be autonomous regulators, right? जो उनको खुद से अपने आप से उनको कुछ बॉडीज रेगुलेट करनी होती है, कुछ वेरियस मैकेनिज्म्स इन द गवर्नमेंट, जो है मशीनरी है गवर्नमेंट मशीनरी, उसको रेगुलेट करना होता है. दे विल परफॉर्म बेस्ट फार फ्रॉम द प्रेशर एंड लॉबिंग ऑफ द बिग सिटी. सो यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि यार अगर आप बड़ी सिटी में जाओ, बड़ी सिटी में देखो, तो देर आर ऑब्वियसली लाइक व्हाट डू यू से, देर आर मेनी पीपल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टेलीकॉम लॉबी. तो टेलीकॉम वाले जो बिजनेसमैन है वो लोग बोलेंगे नहीं यार हमारे फेवर में कुछ चीजें करो, राइट? टेलीकॉम रेगुलेटर को उस तरह से प्रेशर आ सकता है. और if there is a let's say maybe some other kind of lobby, right? Any other kind of lobby, so they can, if the bureaucrats, the autonomous regulators, they live in the same capital city with as the businessmen, right? They can be subject to pressures. तो जब ये इनको यहाँ पे भेज दिया जाता है तो वो प्रेशर भी कम हो जाता है, hence they'll be able to perform best. तो तीसरा पॉइंट आपको जो दिया गया है वो ये दिया गया है, improve performance. चौथा पॉइंट आपको दिया गया है कि okay, now that they are not just sequestered in just one small location, बाकी पूरी जनता और पूरे क्राउड से, पॉपुलेशन से दूर नहीं है, वो सब में मिले हुए हैं. Hence they will be able to develop a better connect with people, right? So the unloved bureaucrats of faraway capitals, उनको ऐसे दिखाया था कि यार ये तो कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, साहब आप लोग हैं, दूर बैठे वहां से डिसीजन लेते रहते हैं अपने घर में, जनता उनको ऐसे देखती है. That they will now become as popular as firefighters once they mix with the regular folk. So once they are in these, जब वो ये वाले लोकेशंस में आ जाते हैं तो बाद में they will become, ठीक है? I hope the second part is clear. आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब देखो, now the third paragraph, the third part comprises two paragraphs. दो पैराग्राफ आते हैं third paragraph में, and there is so much of discussion, so much of content that the author is putting here. But अगर आप सही में देखने जाओ ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए वो बहुत ही कम है, थोड़े से ही पॉइंट्स यहाँ पे, सिर्फ ये दोनों पैराग्राफ मिला के आपके सिर्फ इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, मोर और लेस. ओके, I'll take you through the points very quickly now. देखो, what he talks about in the third part is that before in the last paragraph,
the author talked about, in the last paragraph, the author talked about what are the supposed benefits of the, as per the proponents of this policy. तो जो लोग इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं उनके हिसाब से कौन से बेनिफिट्स, okay? In these two paragraphs he talks about what are usually the aim, what is usually the set of aims that the government has in mind when the government is undertaking this policy. ठीक है, अब दोनों के दोनों आपको सिमिलर लगेंगे पर ये दोनों सिमिलर नहीं है. इन द फर्स्ट केस दोज आर सपोज्ड बेनिफिट्स, जो लोगों को लगता है, जो लोग इसको सपोर्ट करें उनको लगता है कि हाँ उनका ओपिनियन ओरिएंटेड है आप, ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन ओपिनियन कि हाँ ठीक है यार ये इससे ये भी फायदा हो जाएगा, ये भी फायदा हो जाएगा. इट इज काइंड ऑफ वेल इट्स ओपिनियन बेसिकली वैसे. In the second case, these are like well-defined aims that governments usually believe that the governments are trying to achieve when they go for these policies. ठीक है, और ये जो aims हैं उन aims को author ने यहाँ पे नोट किया है, ये दो पैराग्राफ से नोट किया. ओके, पूरा पैराग्राफ हम लोग नहीं देख रहे, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें नोट की. पहला ये है कि ओके, पहला एम आपका होगा कि ओके टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ बोथ सिविल सर्वेंट्स एंड दोज लिविंग इन ब्लॉक कैपिटल्स, राइट. दैट इज द फर्स्ट एम कि यार आप अगर एक जगह सब लोग रह रहे हैं वहां से अगर आपने डिस्पर्स कर दिया तो ऑब्वियसली बाकी लोग जो बचेंगे आपके कैपिटल में उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी बिकॉज द कैपिटल विल बी लेस क्लॉग्ड एंड द पीपल हु आर लिविंग इन द अदर hinterlands who have been dispersed into the hinterlands. Hinterland is a faraway land. Their lives will also be more comfortable because they are not living in clogged spaces anymore. एक तो पहला पार्ट ये. दूसरा, second point, this is the first point. Second point he notes here is to save money. This is the second point. And to right, to save money, कि how से खर्चा भी बचेगा, कैसे बचेगा, that he explains later. Okay, to save money, saving money, that is the second point. ये आपका point number 2 है, ये आपका हमारा point number 1 था. And the third point is to redress regional imbalances. And the third point is to redress regional imbalances. Okay, so in the first 3 lines, the author has given you a very clear overview of what he's going to talk about in the rest of the 2 paragraphs. ठीक है, चलो देख ले. अब बाकी के उसके बाद once he has talked about that, once he has listed the main 3 points, उसके बाद he is going into the details of each one of these one by one. उसके बाद हर एक को पकड़ के एक एक करके उसके डिटेल में गया. ठीक है, इसका डिटेल देखेंगे, इसका डिटेल देखेंगे, ऐसे करके आपका तीसरा सभी का डिटेल देखा जाए. ठीक, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ही नोट्स हियर कि ओके, सो फार एज इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस इज कंसर्न्ड, यार ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये ट्राई किया जा रहा है. दिस हैज बीन ट्राइड मेनी टाइम्स बिफोर. Like even after the Second World War, Britain moved thousands of civil servants to agreeable English country towns as London was rebuilt. पर बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग जॉब छोड़ के जाने लग गए. The attrition issues हो गए आगे वहाँ पे. Right? So that's the first thing he mentions here. Second वो बोलता है कि ठीक है, second reason आपका होता है कि हाँ पैसे बचाने के लिए. Second reason is like for saving money. For the second reason, the author hasn't provided any negative. Right? First reason के लिए improving living conditions के लिए उसने एक negative बताया कि यार ठीक है ये एक aim तो है, but at the same time people there's a concern of attrition. There's a concern of people leaving the jobs if they are sent off to far off places, जो कि आता है. सेकंड में सेविंग मनी वाला बताया गया है, वहां पे उसको एक्सप्लेन किया है कि ओके एजेंसीज जो जिनको विच आर मूव्ड एल्सवेयर, अगर वो दूर जगह उनको भेज दिया जाता है तो वहां पे in the hinterlands they'll be able to recruit more skilled workers at a lower rate, correct, as compared to capitals, because capitals में आपके MNCs और वो सब बहुत है, डिमांड्स है उनकी काफी ज्यादा, correct. So correct, where well-paying multinationals mop up talent, so the demand for professionals will be high in the capital, correct, that makes sense. वहाँ पे because capital में आपके बहुत सारे multinational companies होंगी, वहाँ पे skilled लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, and hence अगर the same employee will be available to you, employee with a similar skill will be available to you at a higher price in the capitals as compared to hinterlands, correct, faraway lands. So एक तो ये हो गया आपका सेविंग मनी वाला पॉइंट. तीसरा पॉइंट ऑथर ने यहाँ पे बताया है, द नेक्स्ट पॉइंट दैट ही नोट्स हियर इज दैट द फाइनल फॉर द लास्ट aim was to address regional imbalances. Now this is something that we as Indians will be able to relate to. Okay, Norway treats federal jobs as a resource every region deserves to enjoy, like profits from oil, right? So जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स को काफी वैल्यू के साथ देखा जाता है कि they offer a lot of stability etc, right? So hence if you transfer government agencies, अगर आप एक कैपिटल के बजाय अलग अलग छोटे सिटीज में गवर्नमेंट एजेंसीज को ट्रांसफर कर देते हो, then with the government agencies you also end up creating a lot of government jobs in these
फार अवे प्लेसेस, राइट? तो जिससे कि उन सब जगह का भी वहां पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, करेक्ट? सो दीज रीजनल इम्बैलेंसेस वो आपके एड्रेस हो जाते हैं, ठीक है? सो sometimes the aim is to fulfill the potential of a country's second tier cities, tier 2 cities का डेवलपमेंट होता है। हाँ, एंड फाइनली अच्छा, इसके साथ में ऑथर ने एक और पॉइंट यहाँ पे नोट किया है दैट he gives an example, by the way, that the decision in 1946 to set up America's Center of Disease Control CDC in Atlanta rather than Washington, वो जो उन्होंने वॉशिंगटन की जगह उसको अटलांटा में सेटअप किया था, उससे काफी फायदा हुआ, राइट? नाउ अटलांटा हैज नाउ बिकम अ हब ऑफ आवर हेल्थ सेक्टर रिसर्च एंड बिजनेस। तो एग्जांपल दिया कि यार रीजनल इम्बैलेंसेस भी आपके सब हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनली ही नोट्स दैट कि यार पर एक डिलेमा है, देयर इज अ डिलेमा व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, कि मान लो आप एक सेंटर में से आप लोगों को, गवर्नमेंट एजेंसीज को आप बाकी जगह भेज दे रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे एक डिलेमा जरूर आता है। तो यस, इट्स ट्रू दैट कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा एंड ये सब चीजें आप काफी बढ़ा दोगे, एम्प्लॉयमेंट में काफी फायदा हो जाएगा लोगों को एटसेट्रा, एंड द सिटी विल आल्सो डेवलप, करेक्ट? वो सब बेनिफिट्स हैं। बट द नेगेटिव ऑफ दिस पॉलिसी, विल बी दैट you will not be able to get very qualified workers, आपको qualified workforce नहीं मिल पाएगा यहाँ, correct? So and like if you rather if you go to larger cities, then you'll be able to get infrastructure, better qualified residents, and वो सब चीजें मिल पाएगी। So you have to like choose between one of these two, आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। Either you focus more on the development of tier 2 cities and then don't worry so much about the qualified workforce and the infrastructure, जो कि धीरे धीरे वहां पे डेवलप होगा, और इफ यू वांट अ क्वालिफाइड वर्कफोर्स एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन द स्मॉल सिटीज विल नॉट सी बेनिफिट्स, बिकॉज ये आपको सिर्फ कैपिटल सिटीज में मिलेंगे। दिस इज द डिलेमा ही नोट्स, एंड फाइनली डिलेमा नोट करके उसके बाद लास्ट में एक करप्शन वाला पॉइंट ऑथर ने बोला है, एंड दैट्स व्हाट द पैसेज एंड्स विद। ठीक है, करप्शन वाला पॉइंट क्या बोला ऑथर ने कि ओके, when your what do you say, when your government agencies or government officials, when they move from the capitals, जब वो isolated जगह पे भेज दिए जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि the rate that this increases the rate of corruption, by manyfold, ये काफी corruption बढ़ा देता है यार, right? So that's what he and like because journalists जो आपके जो major journalists है जो कि आपके capital में रहते होंगे, they will not be able to keep a watch on these, वो उन लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। exactly ठीक है। सो ये आपका पैसेज था। सब कुछ मिला के देखो तो पहले फर्स्ट पार्ट में देखो, आराम फटाफट देखते हैं इसको। एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है ऑथर ने कि भाई कैपिटल सिटीज डिस्गॉर्जिंग ब्यूरोक्रेट्स, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप के साथ, और ट्रेंड क्या रिफ्लेक्ट करता है वो बता दिया, उसके सपोज्ड बेनिफिट्स बता दिए सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में उसके स्पेसिफिक एम्स एंड देयर एसोसिएटेड कंसर्न्स वो बता दिए गए, एंड फाइनली द डिलेमा इनहेरेंट इन द एम ऑफ एड्रेसिंग रीजनल इंबैलेंसेस एंड करप्शन का इशू बता दिया गया, करेक्ट? अगर मेरे को सेंट्रल आइडियाज का लिखना है, आई विल राइट रिलोकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अवे फ्रॉम कैपिटल सिटीज इज एन ऑनगोइंग ट्रेंड, ठीक है, and supposedly has many benefits. However, there are also many trade-offs involved that are worth due consideration. That's it. ऑथर आपको बस इतना ही कहना चाहता है पूरे पैसेज में। देखो इतना सारा यहाँ पे है, इसमें बोलना ऑथर सिर्फ ये चाह रहा है कि यार ये नया ट्रेंड आया कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ से वहाँ मूव किया जा रहा है, बट एंड काफी लोग इसके काफी बेनिफिट्स मांगते हैं, एंड बट and there are also there are certain aims due to which the government is trying to do this, governments are trying to do this, but there are also some associated concerns भी हैं उसके कुछ। That's it, ठीक है, पूरा पैसेज सिर्फ ये था। तो आपको जब भी आरसी पढ़ना है ना, आपको you're not supposed to look at this as 500 words, you're supposed to look at this as 5 ideas, okay? मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूविंग योर स्पीड एंड एवरीथिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो लेट मी जस्ट राइट दिस, दैट एन आरसी इज नेवर 500 words, okay? You'll have to bear with my illegible handwriting. An RC is rather just 5 ideas. That's how you're supposed to look at an RC, okay? Chalo, let's start with the questions. I'll just have a sip of water. Okay. Thank you for the break. Question 1. अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे आपको ये छोटी मोटी चीजें दिख रही होंगी, EOI EOF, ये सब कुछ हम लोग टूल्स और तरीके चीजें यूज करते हैं क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस, इसकी चिंता जरा भी मत करें आप लोग जो भी पहली बार देख रहा है। जैसे जैसे हम लोग RC सॉल्व करते जाएंगे, आप मेरे साथ रोज एक एक घंटा यहाँ पे स्पेंड करेंगे, हम लोग सीखेंगे RC सॉल्व करना, वैसे वैसे चीज़ आपको ये मालूम होती जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द डाउट्स दैट यू हैव एंड उसको सॉल्व करो। So first question, according to the passage, colonial powers located their capitals. तो देखो यार, यहाँ पे this इसको ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं कहता हूँ, I call this question an SPOR question. SPOR क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? POR is point of reference and SPOR is single point of reference. उसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ एक ही पॉइंट से आ जाएगा, ये एक ही जगह से आपका ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, राइट? दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। बिकॉज ये देखिए यहाँ पे आपको इधर एक ही वेट, इफ आई कुड जस्ट मूव दिस, just give me a second. Okay, I'm gonna move this around for a bit. ठीक है, नाउ गुड। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आपका एक ही जगह से आ रहा है कि यार कॉलोनियल पावर्स किस लिए करते थे, तो कोस्टल कैपिटल्स पिक्ड बाय ट्रेड फोकस्ड एम्पायर्स वर स्पर्न्ड फॉर रीजनली न्यूट्रल वंस। सो कोस्टल कैपिटल्स वर पिक्ड बाय ट्रेड फोकस्ड एम्पायर्स। अब यहीं से आपका ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कॉलोनियल पावर्स लोकेटेड देयर कैपिटल्स बेस्ड ऑन व्हाट? ट्रेड। दीज वर व्हाट? दीज वर दे वर, ये क्या थे? ये लोग आपके ट्रेड फोकस्ड थे ना, तो आपका ये ट्रेड फोकस्ड होगा, करेक्ट? FOCUSSCD, ठीक है, so that's your keyword here. Let's look at go option by option. Based on political expediency. Expediency means getting things done quickly. Okay, that's what expediency stands for. कि मतलब political administration में ये सब चीजें जल्दी हो पाए, इसलिए कर रहे थे। Is that why the colonial powers were locating their capitals? No, that's not the case, right? It's clearly given here, बहुत ही clearly आपको दिया हुआ है that coastal capitals were picked by trade-focused empires. They were focused on trade. Okay, so this becomes what kind of error? We will call this political expediency का आपका discussion has not. I don't think political expediency has been talked about anywhere in the passage. Hence, we will regard this as what? As an error of inclusion. Whenever you have something in the option that comes from outside the purview of the passage, अगर कोई बाहर की इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी ऑप्शन के अंदर जो कि पैसेज में नहीं दी गई है, okay, then the option is said to have committed an error of inclusion and it will be eliminated with a capital E. आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है यहाँ पे? हमें ऑब्जेक्शन किस चीज पे ऑब्जेक्शन है इस ऑप्शन में? पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पे हमें ऑब्जेक्शन है एंड हमने इसको एलिमिनेट किया है कैपिटल ई से। ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, we are kind of short on time. To promote their trading interests, yes, this is given very directly. ये बहुत ही directly आपको दिया हुआ है कि yes, trading interest, they were trade focused, so yes, this makes sense. This is totally in line with the passage. So what do you do about this? You'll select this with a capital S. अच्छा, E guys, when I see capital E मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, that means elimination. Okay, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, capital E is for elimination, capital S is for selection, and not just selection. Capital S stands for strong selection. Okay, ये चीज मैं आपको रुको एक बार, let me explain this to you. आपको ये कहाँ पे explain करूँ? Explain this to you here. यहाँ पे थोड़ी जगह बना के मैं आपको explain कर दूंगा क्या चीज है। देखो, कैपिटल एस हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल एस यूज करते हैं, ओ यूज करते हैं, कोई भी ऑप्शन को लेबल करने के लिए हम लोग ये चीजें यूज करेंगे। कैपिटल ई विल स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन, ओके। स्मॉल ई स्टैंड्स फॉर वीक एलिमिनेशन। वीक एलिमिनेशन इज बेसिकली जब आपको लग रहा है कि नहीं यार एकदम क्लियर नहीं है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बट लग रहा है कि नहीं मोस्ट प्रोबब्ली इट इज रॉन्ग। ओ इज when you're not sure about the option at all, you're just putting the option on hold. Small s is for weak selection, that you're sure about the option but you're not absolutely sure. And strong, capital S is for strong selection. ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इसको ऊपर डिटेल सेशन में लोग बाद में लेंगे कि इसका फायदा क्या होता है इसको ऐसे लेबल करने का। अभी के लिए आप ये समझ के आगे चलिए। सो टू प्रमोट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे क्लियरली आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आपको ये दे रखा है, तो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन एज अ कैपिटल एस कि आपका ये तो आंसर हो ही सकता है। नेक्स्ट, वेयर दे हैड द डेंसेस्ट पॉपुलेशंस। नाउ डेंसेस्ट पॉपुलेशंस जो है
like this has dense population has been like clogged in dense populations has been talked about in terms of clogged capitals, and वो कोई और पार्ट में आपका बात हो रहा है उसका डेंस पॉपुलेशन की बात किसी और पार्ट में पैसेज की हुई है, तो यहाँ पे नहीं हुई है, एंड इनफैक्ट इट इज नॉट इवन टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ डेंस पॉपुलेशंस. सो दिस इज अगेन आई वुड वी विल रिगार्ड दिस एज एन एरर ऑफ डिस्टॉर्शन. कोई एक जगह का इन्फॉर्मेशन लेके किसी और जगह के साथ आप मिक्स कर दो तो आपने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया. सो विल बी कंसीडर्ड एज एन एरर ऑफ डिस्टॉर्शन एंड एलिमिनेटेड द कैपिटल ई. नेक्स्ट, टू शोकेस देयर पावर एंड प्रेस्टिज, ये भी आपका, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है. सी इसमें when we are solving this a question, but there is a method that we are going by. If you're watching this for the first time, I want you to pay very close attention to the methods that we follow even for the simple questions, because once you know the methods, once you understand the methods, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन में मेथड्स का फायदा नहीं दिखेगा, वहां पर दिख जाए हाँ ये तो दिया हुआ है, बट जब पर मेथड्स को सीखने का बेस्ट जरिया सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे आप जब आप मेथड सीख जाएंगे तो आपको फिर मुश्किल सवालों में काम आएंगे. ठीक है, तो आप देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे. हमने नोट किया कि क्वेश्चन किस टाइप का, हमने नोट किया कि हमने लाइक व्हाट आर आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन विद एवरी ऑप्शन, हर एक ऑप्शन के साथ हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है. ये POBGA स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन. यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी था, यहाँ पे डेंसिस्ट पॉपुलेशन था, यहाँ पे है टू शोकेस देयर पावर एंड प्रेस्टीज. पावर एंड प्रेस्टीज का पूरा डिस्कशन ही नहीं है पूरे पैसेज में, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन पावर एंड प्रेस्टीज है. ठीक है, so with every option that we eliminate, we have noted what is our point of objection. तीनों में हमने point of objection हमारा नोट किया यहाँ. Okay, note, और at the same time we have labeled every option with the mode of assessment. This is the mode of assessment: strong selection, weak selection, hold, weak elimination, strong elimination. Got it? तो यहाँ पे हमने इसको mode of assessment हमारा यहाँ पे strong elimination से आपका ये eliminate हो गया. तीन ऑप्शन आपके eliminate होते हैं, एक ऑप्शन आपका select होता है. That is your correct answer. Okay. ठीक है, ऋत्विक एंड एनीवन एल्स हु इज वाचिंग, आर वी क्लियर अबाउट दिस सो फार? मेथड्स धीरे धीरे आ जाएंगे. मेथड्स के लिए आप 100% अभी समझ में आ जाएगा वो मत समझो. आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा बहुत मेथड समझ में आ गया तो काफी है. ठीक है, तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा जाए. रुको, लेट मी जस्ट positions properly. According to the author, relocating government agencies has not always been a success for all of the following reasons except. Okay, so देखो ये this is a inversion question. इसमें inversion किया गया, मतलब यहाँ पे आपको you don't have to select the option which is correct as per the passage. You have to select like the option which is not correct as per the passage, because you have accept here, यहाँ पे accept दिया गया that all of the following are reasons for why relocating government agencies have not been a success, except, which means ये इन सब में से आपके तीन आपके पैसेज में दिए गए हुए रीजंस होंगे. दैट मींस 3 of them will be true as per the passage and 1 of them will be false as per the passage, right? False वाला आपका incorrect होगा, correct? So that will be your answer. The false one will be your answer. So you need to be clear about this before you go on to mark assess the options. ठीक है, first option, a rise in pollution levels and congestion in new locations. अच्छा मुझे ये बताओ, पूरे पैसेज में ऑथर ने कहीं पे भी पॉल्यूशन लेवल या कंजेशन का डिस्कशन किया है क्या? Has the author talked about, has he even mentioned in passing pollution levels or congestion anywhere at all? He has not. Correct? So this is the point of objection. हमारा point of objection आपका ये होगा. हमें इसका point of objection मिल गया. Mode of answering क्या होगा आपका यहाँ पे? Capital S होगा, because you're selecting the false option. आपको false option select करना है. आप इसको strongly select करेंगे because we are sure कि ये कहीं नहीं दिया गया है. Next, the difficulty of attracting talented, well-skilled people in more remote areas. Yes, this has been talked about in the last part of the passage. अगर आपको याद हो, second last part में passage में discussion किया है कि हाँ, if you like the dilemma has been talked about कि अगर आप यार if you go to tier 2 cities, if you go to the less developed cities, then you won't be able to get very qualified workforce. This has been talked about, and hence this is true as per the passage. ठीक है, true है तो आपका ये eliminate हो जाएगा capital D से. आगे चलते हैं. Increased revenues of corruption away from the capital city. In the last part of the paragraph, this has been discussed.
बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया गया है आपका ये भी। तो ये भी आपका ये आपका हो जाएगा, दिस इज आल्सो बी ट्रू एज पर द पैसेज, तो एक्सेप्ट में नहीं आएगा, करेक्ट, एग्जैक्टली, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया कैपिटल ई से। See, in these cases there are no modes of objection, यहाँ पे मोड ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं है आपका, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्शन, यहाँ पे सब कुछ सही है, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ। हाई स्टाफ लॉसेज एज पीपल मे नॉट बी प्रिपेयर्ड टू मूव टू स्मॉलर टाउन्स, so this has not been mentioned in the exact terms, but this has been mentioned as high attrition rates. हाई एट्रिशन रेट्स की बात की है ना पैसेज में। एट्रिशन रेट का मतलब क्या होता है कि द रेट एट विच पीपल लीव द कंपनी, राइट? सो यस, सो दैट हैज बीन, दिस हैज बीन पैराफ्रेज, ये इसका बेसिकली ये इसका एक पैराफ्रेजिंग है, ठीक है, ये इसका पैराफ्रेजिंग है और कुछ नहीं है। सो दैट मींस इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, सो यू एलिमिनेट दिस एज वेल विद द कैपिटल ई, ठीक है। तो आपने, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 1। क्लियर अबाउट दिस, सब बराबर यहाँ पे, कोई दिक्कत, जरा सा भी संदेह नहीं। आगे चल रहा हूं, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। यार ये पेडिग्री क्या होता है? अभी इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं, लेट मी डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पेडिग्री। हैव यू हर्ड ऑफ दिस what do you say, brand of pet food, right? Pets के लिए एक ब्रांड होता है फूड का, खाने का, स्पेशली फॉर डॉग्स, जिसको पेडिग्री बोला जाता है, पेडिग्री, है ना? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज दैट? व्हाई इज द नेम ऑफ द ब्रांड पेडिग्री? आई टेल यू व्हाई। पेडिग्री comes from, पेडिग्री का जो मतलब होता है, इट्स लाइक इट रेफर्स टू अ लॉन्ग एंड नोबल लीनिएज, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू पेट्स की जब बात करो, कोई भी आप एक पेट एंथुसियास्ट से आप बात करोगे, काफी बार आपको पेट एंथुसियास्ट ऐसे मिलेंगे, प्योर ब्लड, एग्जैक्टली ऋत्विक, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, दैट मींस हैज अ नोबल lineage, right? कि हाँ वो पता नहीं उस फैमिली से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां, मतलब ये these are noble families. This whole pedigree thing has been so prevalent in our cultures. आपको मूवीज में भी दिख जाता है, हैरी पॉटर में भी दिख जाता है कि ओके प्योर ब्लड्स, एज दे कॉल इट, मड ब्लड्स एक्सेट्रा, ये सब बहुत कुछ है ना। सो दिस पेडिग्री रेफर्स टू अ प्योर लिनिएज, अ प्योर ब्लड, और समवन हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक पूरा बहुत पुराना हिस्ट्री है इसके पीछे का। हेंस and when you associate a long history with something, you also indirectly associate a lot of value with it. उसके बाद आप काफी वैल्यू भी एसोसिएट करते हो। One second. So ठीक है, that's why they say कि okay, ठीक है, अब हम लोग पेडिग्री के वो बी स्कूल वाले पेडिग्री पे नहीं जाएंगे, लेट्स कम हियर। सो पेडिग्री हियर एसोसिएट्स विद हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ समथिंग। ये जो लॉन्ग पेडिग्री ऑफ द एम टू शिफ्ट सिविल सर्वेंट्स टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स जो दिया था पैसेज में, व्हाट डज दैट इम्प्लाई? ठीक है, तो इसके एक बार पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे चलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस देख लिया जाए कि लॉन्ग पेडिग्री आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। द फर्स्ट, इट सेज द फर्स्ट एम ऑफ इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस हैज अ लॉन्ग पेडिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत बार किया जा चुका है भाई, ये बहुत बार लोग ट्राई कर चुके हैं पहले, और एग्जाम्पल में भी दिया है। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन ने काफी लोगों को यहाँ पे मूव किया था, पर बाद में फिर सबके सब जॉब छोड़ के जाने लग गए। ठीक है, चला आ रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग पेडिग्री हुआ। सॉरी, विच वन इज दिस? सो ये जो दिया हुआ है सर्वेंट्स, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दैट दिस मूव, अब हम लोग यहाँ से आंसर कर सकते हैं इसको आराम से, हैज बिकम कॉमन प्रैक्टिस इन सेवरल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। नो, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग done, has been done in the past, काफी बार पहले भी ये ट्राई किया जा चुका है, ये चलता है। It does not relate with it being a common practice in several countries worldwide. So although now this ये जो पार्ट है ना, common practice in several countries worldwide, ये आपका indirectly इस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। It does reflect the trend that the author is talking about in general in the passage. But that is not by long pedigree. But long pedigree उस ट्रेंड को रेफर नहीं कर रहा है। This trend has been talked about in the passage. ये ट्रेंड की बात हो रही है कि हाँ, वर्ल्ड वाइड कैपिटल सिटीज आर डिस्गॉर्जिंग ब्यूरोक्रेट्स, बट करेक्ट, यू गेट द पॉइंट। ठीक है, सो
ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं किस तरह का एरर बोलूंगा? इसको हम लोग बोलेंगे दिस विल अगेन बी एन एरर ऑफ डिस्टॉर्शन। सी बिकॉज ये आपका कंटिन्यूएशन में है, यू हैव टू रीड दिस अलोंग विद द क्वेश्चन स्टेप। अगर ये क्वेश्चन स्टेप के साथ में नहीं पढ़ा होता तो इसको मैं टीबीएनआर बोलता। टीबीएनआर क्या होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, जब आएगा तब बताऊँ, डोंट वरी अबाउट। अभी बस इसको समझो कि ये डिस्टॉर्शन किया गया है, ये आइडिया पैसेज में है पर पेडिग्री से रिलेटेड नहीं है, तो दो अलग अलग पैसेज के पार्ट्स को लेके मिक्स कर दिया तो आपका डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है। एंड इसको आप कैपिटल से एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट इज सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियंस एंड द रूलिंग एलिट्स। वेल, सपोर्टेड बाय रूलिंग एलिट्स ये कहाँ दिया हुआ है? दिस इज अ क्लियर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन, राइट? क्लियर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन हियर, रूलिंग एलिट्स। पॉलिटिशियंस का तो चलो ठीक है, कोई डिस्कशन होगा या होगा पता नहीं। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस भी फ्रैंकली आपको देखो तो मेरे को नहीं, आई डोंट रिकॉल पॉलिटिशियंस बीइंग मेंशन एनीवेयर, तो वो भी मेरे को नहीं लग रहा। बट रूलिंग एलिट्स तो डेफिनेटली नहीं दिया है। तो कौन सी टाइप का एरर होगा? अगर पैसेज में व्हाट इज हाँ कैपिटली, बट व्हाट इज द काइंड ऑफ एरर, हमने अभी भी डिस्कस किया ये। इफ यू हैव समथिंग इन द पैसेज जो कि पैसेज के बाहर से आ रहा है, बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट? एरर ऑफ इंक्लूजन। एरर ऑफ इंक्लूजन, वी कॉल इट ईओआई, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ। टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अचीव इट्स इंटेंडेड आउटकम्स। काफी समय लगता है इसको अपने आउटकम्स लेने में। नाउ दिस इज समथिंग दैट द ऑथर, पता नहीं अगर मैं ऑथर से अलग से बात करूँ कि यार सर आपके और भी व्यूज बताइए इसके ऊपर, मैसेज में काफी हर चीज आपने नहीं बताई, तो मे बी द ऑथर माइट एग्री विद दैट, बट द ऑथर हैजंट टॉक्ड अबाउट हाउ मच टाइम इट टेक्स इन टर्म्स ऑफ टू अचीव इट्स इंटेंडेड आउटकम्स। तो ये भी आपका ईओ आ जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन, इस आइडिया की भी बात डिस्कशन नहीं हुआ है पैसेज में, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा विद अ कैपिटल ई। क्लियर है गाइस? आर वी क्लियर विद ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 एलिमिनेशन? ये तीनों एलिमिनेशन क्या आप सभी को क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन 4 पे आ रहा हूँ, आगे चलते हैं। इज नॉट अ न्यू आइडिया, हैज बीन ट्राइड इन द पास्ट। यार ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ट्राई किया जा चुका है। यस दैट्स एग्जैक्टली, कैपिटल एस, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन से मार्क करके आप इसको आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ देन, आई एम अज्यूमिंग ये क्वेश्चन क्लियर। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। People who support decentralizing central government functions, अच्छा देखो, डिसेंट ये उनकी बात हो रही जो कि सेकंड पैराग्राफ में था, प्रोपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रेंट, है ना। हमने नोट किया था कि वो 3-4 उनके पॉइंट्स हैं कि बोलते हैं कि यार रिस्क कम हो जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगी, रेगुलेटर्स के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, एंड एक और पॉइंट था, देयर वाज वन मोर पॉइंट, है ना, रेगुलेटर्स के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, एंड आई थिंक दैट वाज अबाउट इट, नहीं था। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज गवर्नमेंट के भी एम्स है, गवर्नमेंट के भी एम्स है। तो ये सारे आपके डिस्कशन हुए थे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका ये। तो पीपल हु सपोर्ट, जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस को यार डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, वो सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस, राइट। सो पीपल हु support this idea, these people, what will they be least likely to cite which of the following reasons for their view? वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लीस्ट लाइकली कौन से होंगे? करेक्ट। बिफोर यू मूव ऑन टू रीडिंग द ऑप्शंस, यू शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके आप उस ऑप्शन को किस ढांचे में उसका जज करेंगे, इन व्हाट फ्रेमवर्क विल यू जज द ऑप्शन, इसका मापदंड क्या होगा, कैसे बताता हूं मैं। लीस्ट लाइकली टू साइट अ रीजन का मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी 3 रीजंस that these people who support, they will be likely to cite, correct। देखिए 3 रीजन ऐसे होंगे जिसको वो, या फिर वो लोग उसको they'll be likely to cite प्लस होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि it might not be relevant, जीरो भी हो सकता है। and then you might have a fourth reason which might be just opposite to their view, जो उनके व्यू से अपोजिट हो, करेक्ट। तो आपको ऑप्शंस में अलग अलग चीजें मिल सकती है। आपको ऑप्शन में, इन द ऑप्शन यू माइट गेट 3 reasons that they are likely to cite and one that is neutral, in that case your answer will be the neutral one, or in the option you're also likely to get 2 reasons which they are likely to cite, one which is neutral
and one which they oppose. तो अगर ये वाला केस आता है प्लस जीरो माइनस वाला, तो आप नेगेटिव वाले पे मार्क करोगे. अगर आपका 3 प्लस एंड एक न्यूट्रल वाला आता है तो आप न्यूट्रल वाले पे मार्क करोगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझिए क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है. तो इसमें क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नहीं, ये इसकी तो लाइक पीपल गेट कंफ्यूज, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस न्यूट्रल एंड नेगेटिव. कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग न्यूट्रल मार्क कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क करते हैं. न्यूट्रल चुना जाए या नेगेटिव चुना जाए? भाई चुनाव इस चीज, your selection is based on what is available to you for selection. ठीक है. चुनाव करने के लिए आपकी, yes exactly. तो यहाँ पे लीस्ट लाइकली में, ठीक है, चलो आई एम अज्यूमिंग, चलो क्लियर हो गया, चलते हैं फिर देखते हैं इसको. इट वुड वीकन द नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया एंड द कैपिटल. Now this is a very good example of distorting an idea that has been talked about in the passage. अब देखो, ऑथर ने पैसेज के एंड में एक बात कही थी. ऑथर सेड दैट यार अगर इन सबको यहाँ से मूव कर दिया गया, इफ यू एंड अप अगर ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ से मूव कर दिया तो ऑब्वियसली करप्शन बढ़ जाएगा. व्हाई? बिकॉज नाउ द मीडिया विल नॉट बी एबल टू कीप एन आई ऑन देम. करेक्ट. इसको इन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब काफी सिमिलर लाइंस में सिमिलर तरीके से लिखा है, बट द आइडिया हैज बीन चेंज्ड टोटली. दिस सीम्स टू इम्प्लाई दैट देयर इज अ नेक्सस, दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कार्टेलाइजेशन, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कुछ तो मतलब उनकी मिली भगत जैसा बोलते हैं ना, देयर इज अ वर्ड कि वो लोग आपस में नेक्सस बना के रखा है कि नहीं इस चीज को ऐसे कंट्रोल करेंगे. देयर इज अ नेगेटिव कनोटेशन विद नेक्सस, राइट? क्योंकि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया, क्योंकि द ब्यूरोक्रेट्स आर कंट्रोलिंग द मीडिया, और दे आर लाइक they are doing something selfish for their whole group. वैसा लग रहा है ये, as opposed to the idea that was given in the passage कि okay, the media helps keep an eye on the bureaucrats to keep corruption at bay, जो कि नहीं हो पाएगा अगर ये मूव हो गए. ठीक है. तो उस आइडिया को पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया गया. ठीक है. एक तो ये चीज हुई. पहली बात तो आइडिया डिस्टॉर्टेड. दूसरा पॉइंट, these are people who support decentralization. fair? तो and let's say there is a let's मान लो कि आपका एप्लीकेशन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में काफी बार एप्लीकेशन क्वेश्चन में आप काफी बार बाहर की इंफॉर्मेशन अलाउ करते हैं. तो मान लीजिए कि हाँ, मे बी देयर इज एन एक्सेस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया द कैपिटल व्हिच इज नॉट गुड फॉर द पब्लिक. फेयर इनफ. नेक्सस है तो अच्छा नहीं होगा ना पब्लिक के लिए, कैपिटल और मीडिया, ये आपका ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया के बीच में. अगर उनको मूव करने से वो नेक्सस ब्रेक हो रहा है, then breaking that nexus will definitely be good. Are you guys with me? क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं ये आइडिया कन्वे करने में कि अगर आपका ये नेक्सस ब्रेक होता है then it will actually be good, right, for the public. Correct. तो फिर in that case why will this then this people will not be likely to use this reason to cite. Correct. हाँ. तो अगर ऐसा हो रहा है, ये हमने अगर इट कुड वीकन द नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया एंड द कैपिटल. तो अगर आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना भी है तो आपको इसको वहां तक सोच के जाना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, नेक्सस है जो कि नेगेटिव है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर फायदा रहेगा, इसलिए दे माइट यूज दिस रीजनिंग. ठीक है. बट द पॉइंट रिमेन्स. ठीक है. तो एंड दैट्स द रीजन व्हाई, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल ई मार्क नहीं करेंगे. ठीक है. मैंने आपको दो चीजें बताई. एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे डिस्टॉर्शन कर दिया गया है आइडिया का. आर यू क्लियर विद द डिस्टॉर्शन? की एक्चुअल बात जो हो रही थी कि वो करप्शन नहीं हो पाए, मीडिया करप्शन को रोकता है, वो बात हो रही है. नेक्सस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे नेक्सस ले आए ये लोग. ठीक है. एक तो डिस्टॉर्शन मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस ऑप्शन में कि ओके, इफ एट ऑल देयर इज अ नेक्सस देन दिस विल बी समथिंग दैट विल बी सीन एज पॉजिटिव बाय दीज पीपल. करेक्ट. बिकॉज ये उसको ब्रेक करेगा. फेयर इनफ. क्या मेरे को बस मैं आपको ये कैपिटल या स्मॉल यू बताने से पहले बस ये बता दो कि ये दो चीज आप समझिए कि ये दो चीज से आ रही है. अभी क्लियर सो फार? उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं. ठीक है. नाउ डिस्टॉर्शन की वजह से हम इतना क्लियर हो रहा है कि यार ये प्रॉब्लम में कुछ तो प्रॉब्लम, इस ऑप्शन में कुछ तो कंसर्न्स हैं. ठीक है. बिकॉज ये पैसेज में ये सब इस तरह नहीं दिया हुआ है, पैसेज में कुछ और दिया है. ठीक है. ओके. बट ये जो इसका एक पॉजिटिव जो एंगल है ऑप्शन का, तो अगर कुछ कंसर्न्स है, अगर इसमें सिर्फ कंसर्न्स ही होते हैं और कुछ पॉजिटिव एंगल नहीं होता कि जिसकी वजह से ये शायद सपोर्ट हो सकता है, इन दैट केस आई वुड हैव, मतलब मैं इसको सीधा कैपिटल ही मार्क कर देता. बट देन द थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्टॉर्टेड प्रॉब्लम, द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन जहां पे ये डिस्टॉर्ट हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट
एक पॉजिटिव एंगल दिया जा रहा है कि ओके ये एक कारण हो सकता है कि शायद सपोर्ट करे, इसलिए आई विल नॉट मार्क दिस एज अ कैपिटल ई, आई विल मार्क दिस एज मोर ऑफ अ केस ऑफ स्मॉल ई, स्मॉल ही मार्क करेंगे इसको हम लोग की वीक वीक सिलेक्शन रखेंगे। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली तो ये डिस्टॉर्टेड तो गलत ही है, बट अगर क्वेश्चन सेटर ने पता नहीं क्या ऐसे कुछ उस तरीके से सोच के किया होगा तो शायद ये क्या मतलब, तो हम लोग एकदम पक्का एलिमिनेशन नहीं करेंगे, समझ गए। सो वाई हैव वी मार्क दिस कैप स्मॉल ई नॉट कैपिटल ई, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। मोर इंडिपेंडेंस कुड बी एंजॉयड बाय रेगुलेटरी बॉडीज लोकेटेड अवे फ्रॉम पॉलिटिकल सेंटर्स, यस दिस इज गिवन ना, ऑटोनॉमस रेगुलेटर्स वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है पैसेज में, ऑटोनॉमस रेगुलेटर्स विल फंक्शन बेटर, ऑटोनॉमस रेगुलेटर्स बेटर फंक्शन करेंगे, तो ये तो आपको क्लियरली दिया हुआ है, तो ये तो क्लियर प्लस है, तो ये तो आपका एलिमिनेट भी हो जाएगा कैपिटली से। ओके जस्ट जस्ट वन सेकेंड, मैंने आपको ये बताने में वो कर दिया कि जस्ट अ बिट, दिस विल बी अ, हमें लीस्ट लाइकली टू अग्री देखना है ना ऋत्विक, लीस्ट लाइकली टू अग्री देखना है, तो दिस विल इनफैक्ट बी अ स्मॉल एस ना, कि अगर ये डिस्टॉर्शन हो गया और ये गलत है पैसेज के हिसाब से, तो देन देयर इज अ गुड चांस दैट दे माइट दैट देन दे आर लीस्ट लाइकली टू अग्री विद दिस, ठीक है। ये मैंने सॉरी माय बैड, ये हमने इसको वैसे कर दिया, ठीक है, जो अग्री करेंगे उसको हम लोग कैपिटली करेंगे, ठीक, ठीक है। तो स्मॉल एस स्लैश ओ, स्मॉल एस स्लैश ओ रहेगा, होल्ड या स्मॉल एस पे रहेगा, ठीक। पॉलिसी मेकर्स में बेनिफिट फ्रॉम फ्रेश थिंकिंग इन न्यू एनवायरमेंट, यस। वॉन्ग्स इन द स्टिक्स, ये जो आपका फ्रेज है ये आपको दिया हुआ है कि वो जो वॉन्ग्स इन द स्टिक्स वाला पॉइंट है वहां पे क्लियरली ये दिया हुआ है, तो ये भी आपका पॉजिटिव, दे विल बी लाइकली टू अग्री विद दिस, तो लीस्ट लाइकली तो नहीं होगा, कैपिटली से एलिमिनेट हो गया। इट reduces expenses as infrastructure costs and salaries are lower in smaller cities, ये भी आपको सेविंग्स वाला पॉइंट भी आपको दिया गया है पैसेज में, करेक्ट, तो ये भी आपका दे विल बी लाइकली टू अग्री, तो ये दोनों आपके क्लियर हो गए, हेंस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, बिकॉज दिस इज लाइक एज मच एज इफ दिस वर ट्रू, अगर ये सही में पैसेज में दिया होता तो मे बी these people may have agreed, but this has not been given in the passage, ये distorted version है उसका, इसलिए this is something that they are least likely to agree, okay, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस, आई होप इसमें, हाँ मैं आपको इसमें एक स्टेप आगे भी समझ में, पोटेंशियल वाला कौन सा एंगल इसका पॉजिटिव भी हो सकता है वो मैं समझाने चला गया, इसलिए थोड़ा सा शायद डाउट हो, बट आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, बट अभी क्लियर, हाँ दिस क्वेश्चन वाज ट्रिकी, दैट्स राइट, ओके, चलो देन आगे चल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, द डिलेमा मेंशन्ड इन द पैसेज रेफर्स टू, अच्छा डिलेमा क्या था आपको, डिलेमा हमें ध्यान में हमने डिस्कस किया था पैसेज डिस्कस करते समय कि डिलेमा वाज वेरी सिंपल, कि यार या फिर आप टायर 2 सिटीज में जॉब दीजिए, तो इन दैट केस वेल यू विल बी एबल टू सी डेवलपमेंट देयर, और या फिर आप बट अगर आप वहाँ पे डेवलपमेंट, अगर आपको टायर 2 सिटीज में जाके वहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट देके डेवलपमेंट चाहिए वहाँ पे, देन यू वोंट बी एबल टू गेट क्वालिफाइड वर्कफोर्स, करेक्ट, और अगर आप ये दूसरे, अगर आपको क्वालिफाइड वर्कफोर्स चाहिए तो आपको दूसरी सिटीज में जाना पड़ेगा, तो बाद में ये टायर 2 सिटीज या फिर ये वाली जगह पे डेवलपमेंट नहीं होगा, करेक्ट, सिंपल पॉइंट है। तो द डिलेमा मेंशन इन द पैसेज वो रेफर क्या करता है देखते हैं हम लोग, चलो देख लिया जाए, कीपिंग गवर्नमेंट एजेंसीज इन द लार्जेस्ट सिटी विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और मूविंग देम टू अ रिमोट एरिया विद फ्यू अम्यूनिटीज, यहाँ पे योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस डिलेमा वर व्हाट, one point was, on one hand you want to address regional imbalances, okay, and on the other hand you want to get a qualified workforce plus good infrastructure, correct, plus good infra, ये आपका dilemma है ना, this is your dilemma now, so your option has to be such that it notes these dilemmas, इसको नोट करेक्ट, एमिनिटीज या इंफ्रा वैसा होना चाहिए, करेक्ट एग्जैक्टली, बट आपका ये जो ऑप्शन है इसमें आपको रीजनल इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं कहीं पे भी, इट्स नॉट गिवन एट ऑल, राइट, सो तो ये आपका क्लियरली एलिमिनेट हो गया विद द कैपिटली, ओके, कीपिंग गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट सिटी विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मूविंग देम टू रिमोट एरिया, तो ये आप, और ये आपको कौन सा एरर होगा, दिस इज, इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं लाई गई है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आई है, बट आइडिया को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, तो इसको आप बोलेंगे एरर ऑफ डिस्टॉर्शन, ओके, नेक्स्ट,
relocating government agencies to boost growth in remote areas with poor amenities, or to relatively larger cities with good amenities. What's the problem with this option? The good thing about this option is कि यार ये boost growth in remote areas with poor amenities, ये point सही है. There's nothing wrong with this. But the problem with this option is that it says nothing about the qualified workforce की बात ही नहीं की है. It says nothing about this. This is totally missing in this option. Got it? मतलब like qualified workforce is missing. है ना? रुको. What do you think? बट स्टिल उसके बाद भी पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको कैपिटली मार्क कर देंगे, बिकॉज दिस स्टिल कम्स क्लोज. इसने एटलीस्ट गुड इंफ्रा की बात की है, गुड इंफ्रा की बात की, एमिनिटीज की बात की है, क्वालिफाइड वर्कफोर्स शायद नहीं है. सो नाउ दिस इज वेयर वी हैव अ स्लाइट लर्निंग पॉइंट. इवन द ऑप्शन दैट यू माइट अल्टीमेटली मार्क फॉर एज द राइट आंसर, वहां पे भी काफी बार आपको कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्शन के मिलेंगे. But you have to remember that you're selecting the best of what is available, right? So यहाँ पे हमारा एक point of objection है that qualified workforce वाला जो point है वो आपका यहाँ पे missing है, but everything else is okay with this option. तो इसको क्या mark करेंगे? Yes, exactly. इसको क्या तो हम लोग इसको capitally करेंगे क्या? Will we mark this as a capitally? Can we mark this as a capitally here? No. We'll mark this as an option of maybe and hold पे रखोगे या फिर weak selection करोगे, दो में से कोई एक, या फिर होल्ड पे या फिर वीक सिलेक्शन. गॉट इट? ठीक है, एग्जैक्टली. आगे चलते हैं. एनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू रिलोकेट टू स्मॉलर टाउन्स और नॉट इंसेंटिवाइजिंग देम इन ऑर्डर टू कीप गवर्नमेंट कॉस्ट्स इन दोज टाउन्स लो. ओके, एनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू रिलोकेट. यार प्राइवेट एंटरप्राइज को रिलोकेट करने का जो आइडिया है ना, उनको प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज करने का कोई आइडिया नहीं है पैसेज. Like अपने आप, like if government agencies move to smaller towns, then other companies might also follow, but encouraging them hasn't been talked about directly. One, दूसरा point आपका जो है, let me depend, yeah. Encouraging private enterprises to relocate smaller towns or not incentivizing them in order to keep government costs low. So this talks neither about regional imbalances, ना ही ये, let's say मैं इसको अगर point 1 बोलूँ और इसको मैं point 2 बोलूँ, this talks neither of point 1 and nor does it talk about point 2. दोनों ही point यहाँ पे discuss नहीं हो रहे. ठीक है? So you can eliminate this very easily with capital E. And in fact it has information from outside the purview of the passage. Like incentivizing private enterprises का discussion पूरे passage में कहीं पे नहीं किया गया है. So it also commits an error of inclusion here. Okay, next, concentrating on decongesting large cities or focusing on boosting employment in relatively larger cities. Okay, what is missing here? Point 1 is missing here, right? Regional imbalances पूरी तरह missing है यहाँ पे. And decongesting आपका एक्स्ट्रा आ गया. So decongesting का डिस्कशन ही नहीं था डिलेमा में. Decongestion का कोई डिस्कशन नहीं है. And boosting employment भी आपका relatively larger cities में नहीं है. Boosting employment आपका होगा भी तो it will be for your regional cities, correct? So the multiple issues with this majorly commits an error of distortion here and will be eliminated with the capital E. अब देखो इसको आपने कैसे मार्क किया? इस क्वेश्चन को हमने मार्क किया है कैपिटल E O/s capital E and capital E. This is your mode of answering this question. हमेशा आपको कैपिटल एस नहीं मिलेगा. ठीक है, EOI and EOD, that's correct. तो ये आपका ऑप्शन, your correct answer here will be like the best available option. Although उसके साथ अभी भी हमें reservation है because qualified workforce यहाँ mention नहीं है, but this is still better than the rest of them. Okay, so this will be our answer. With that, we finish today's session, guys, and yeah, I think this is about it. I will go to the main page of RC6 and आपके अभी जो भी डाउट्स हैं मुझे बताइए. लेट्स, तो इस तरह से हम लोग करेंगे. आज तो हम लोग को देखो थोड़ा सा समय लगा बिकॉज मैं आपको ओवरव्यू भी दे रहा था. पैसेज ओवरव्यू हम लोग हमेशा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बाद क्वेरी रिड्रेस. ठीक है, अभी आई कैन लाइक 5 मिनट मैं आपको और दे सकता हूँ. आप मुझे बताइए आपके इन जनरल कोई क्वेरीज है, BRC कोई क्वेरीज है, आई ट्राई टू एड्रेस.
अगर नहीं है, ज़रूरी नहीं है आज ही हो, आराम से कल बताइएगा तो लेटेस्ट दिन हो। ओके, ठीक है। नथिंग रिलेटेड टू पैसेज, ठीक है। तो ऑलराइट देन, ठीक है। द लिंक, लिंक जो आपको चाहिए पैसेज सॉल्व करने के लिए, कल का पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको लिंक चाहिए होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो प्लीज गेट दैट लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ओके, इट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इट्स द कोर्स, जो आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इट इज फ्री, यू कैन एनरोल देयर फॉर फ्री। पूरी ये सीरीज मैंने फ्री रखी है, सभी के लिए है। एंड उसमें एनरोल करके आरसीज, आपका आरसी कल सुबह 6-7 बजे तक पब्लिश हो जाएगा। एंड अटेम्प्टेड आरसी, आरसी को अटेम्प्ट करके शाम को हम लोग वापस शाम को 6 बजे यहाँ मिलेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक अगर उसमें होना चाहिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग भी नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक इज ऑल्सो देयर इन, शुड बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, इफ नॉट आई हैव इट, मैं उसको रखवा दूंगा। ठीक है गाइस, दैट्स इट। चलो, आई सी यू गाइस। इफ यू वीडियो अगर सही लगा तो लाइक वाइक कर देना यार, लाइक एंड शेयर कर देना। दैट्स इट। ओके, आई सी यू गाइस लेटर। थैंक यू सो मच। स्टॉप द स्ट्रीमिंग नाउ। सी यू टुमारो। गुड डे।